Good morning, students, class 10th. Today's topic is precipitation reaction. So, the reaction in which aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound. The aqueous solution of two compounds on mixing reacts to form an insoluble compound, and this insoluble compound separate out as solid residue. Clear? This insoluble compound separate out as solid residue, which is named as precipitate. Clear? This is called as precipitate. So such type of reaction in which the solid residue or PPT is formed when a gas is passed through solution, such type of reactions are also termed as precipitation reaction. दो पॉइंट्स हैं बेटा इसके अंदर. either aqueous solution of two compounds are mixed together to form insoluble compound, that is called as PPT. Such reactions are called as precipitation reaction. And this insoluble compound is also formed when a gas is passed through the solution ऑफ ए कंपाउंड. क्लियर? आइदर तो हमारे पास दो केसेस हैं इसके अंदर. आइदर वी विल शोज मिक्सिंग ऑफ टू कंपाउंड्स और वन कंपाउंड एंड गैस इज पास थ्रू इट. क्लियर? या तो हमारे पास दो कंपाउंड्स होंगे, उनकी मिक्सिंग से हमारे पास पीपीटी बनता है, या फिर किसी कंपाउंड के अंदर अगर हम गैस पास करते हैं तो वहाँ पर भी सॉलिड रेजिड्यू या पीपीटी की फॉर्मेशन होती है. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. For example, reaction between barium chloride BaCl2 solution and sodium sulfate solution. We have already discussed this reaction in the previous lecture, resulting in formation of barium sulfate solid plus NaCl aqueous. In this case, this barium sulfate is formed as solid residue. This compound is insoluble because the physical state is solid. Therefore, this is called as PPT, and the color of this PPT is white in color. Clear? So, this is the example of precipitation reaction. Next example, when a gas is passed through solution of compound, how this reaction resulting in formation of PPT. For example, we have taken sodium carbonate solution and we add HCl hydrochloric acid dilute to this sodium carbonate. When acid is added to sodium carbonate solution or metal carbonate, it result in formation of salt plus water with evolution of a gas called as CO2. जब भी हमारे पास कार्बोनेट साल्ट होगा, write this point, when we take any carbonate salt, the gas evolved in such type of reaction is always carbon dioxide. Clear? जब भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट साल्ट होगा तो उस केस में हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन देने पे गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? CO2 गैस. क्लियर? नाउ when this CO2 gas, when the CO2 gas is passed through this lime water, this calcium hydroxide is called as lime water. This compound is present in the aqueous state. Now we have taken the solution of this compound, that is calcium hydroxide here. When gas like CO2 is passed through it, it result in formation of CaCO3 solid plus water as liquid. तो यहाँ पर जो solid residue बन रहा है, again this CaCO3 is insoluble compound which exists as white PPT or it will shows milky suspension. Clear? It will shows milky suspension. यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पहले इसको देखो. जब भी किसी कार्बोनेट सॉल्ट में हम एसिड पास करेंगे, डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, तो उस केस में साल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, प्लस यहाँ से गैस जो इवॉल्व होती है वो कौन सी होगी? CO2. When this CO2 gas is passed through this calcium hydroxide solution which is commonly called as lime water, it is also named as slaked lime. जब भी स्लेक लाइन से लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करते हैं तो जो लाइम वाटर है, दिस लाइम वाटर शोज फॉर्मेशन ऑफ मिल्की सस्पेंशन. Why this milky suspension is formed here? This milky appearance or milky suspension is formed due to formation of insoluble calcium carbonate. This calcium carbonate is responsible for giving the solution as milky
appearance. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस. हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि हम किसी सॉल्यूशन में कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है और आपको चेक करना है कि वो गैस CO2 है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? बाय पासिंग द गैस टू लाइम वाटर बाय पासिंग द गैस टू लाइम वाटर. इफ़ दिस लाइम वाटर बिकम्स मिल्की इट मीन्स द गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन इफ़ दिस CO2 गैस इज़ पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस. अगर हम इस लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस को पास करते हैं एक्सेस में, देन व्हाट विल हैपन. ये हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ गया. अब इसी के अंदर CO2 गैस पास करनी है. इस सॉल्यूशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, CO2 गैस इज़ पास्ड इन एक्सेस एंड हेयर दिस CO2 गैस इज़ पास्ड इन लिमिटेड अमाउंट. यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ऐड किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं. यहाँ पर अमाउंट क्या कर दी हमने, इंक्रीज़ कर दी है. नाउ व्हेन CO2 गैस इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस, देन the milkiness will disappear. Then milkiness will disappear, and this milkiness disappear due to formation of the soluble calcium bicarbonate. This compound is called as calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate. Due to formation of this soluble calcium bicarbonate, milkiness will disappear in this reaction. Now next is oxidation and reduction reaction. Next is oxidation and reduction reaction. Oxidation means the reaction which involves addition of oxygen. The reaction which shows addition of oxygen and loss of hydrogen. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? Such type of reaction are called as oxidation reaction. While the reaction which shows addition of hydrogen or loss of oxygen, such type of reaction are called as reduction reaction or reduction process. These two process or these two reactions are just opposite to each other. In case of oxidation, there will be addition of oxygen, means plus का मतलब addition of oxygen, or it involves minus means loss of hydrogen. This process is called as oxidation. And the process which involves addition of hydrogen and loss of oxygen, this process is called as reduction reaction or reduction process. The next example of oxidation reaction is when copper metal, which is reddish brown in color, undergo heating in presence of air. अब हम इसको क्या करेंगे, heat, and this heating takes place for long time, therefore it is called as prolonged heating. Clear? When this copper metal undergo prolonged heating, means heating for a long period of time, this reddish brown metal changes into black color. How this metal changes into black? Because this metal copper undergo oxidation. Addition of oxygen is occurring here, therefore this reaction is an example of oxidation reaction. It means when copper metal undergo oxidation by heating, it results in formation of copper oxide. Next point is when this copper oxide mix with hydrogen gas. Now in this process both oxidation as well as reduction process are occurring here. Copper oxide plus addition of hydrogen gas, it result in formation of copper solid plus formation of water vapors in the gaseous state, and this copper oxide is black in color. When H2 gas is passed through it, it forms copper which is again reddish brown in color. मेटल का कलर यहाँ पर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन, एंड वाटर वेपर्स आर फॉर्म. नाउ दिस कॉपर ऑक्साइड चेंजेस इनटू कॉपर. यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो चुका है, लॉस. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी नो दैट लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस. नाउ इन सेकेंड केस दिस हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड चेंजेस इनटू H2O. यहाँ पर सिर्फ H2 था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, H2O. तो इसमें एक्स्ट्रा क्या एडिशन हुआ है, O. देयरफॉर दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस शोज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. क्लियर? अभी सिंगल रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी. देयरफॉर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस and reduction process, such type of reactions are called as redox reaction. Clear? The reaction which involves reduction as well as oxidation in the single reaction, such type of reactions are called as redox reaction.
This word redox means red means reduction, ox means oxidation. Clear? So such type of reactions are called as oxidation reaction.